हेलो एवरीवन। सिंस यस्टरडे मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं एंड एक थॉट आया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे दरिया में अगर पानी दरिया जब भी आप विज़िट करते हो तो आपको ऐसे लगता है कभी कभी कि कितनी सारी चीज़ें ये दरिया में है, राइट। कितनी सारी चीज़ें जो पानी नहीं चाहता है कि उसकी खुद की जगह पे वो आए, right? But still, it is holding it. It never gives you back instantly. But yes, जब भी ये चीज़ भर जाती है, जब भी ये पानी का लेवल या फिर उसका लेवल आ जाता है, उसको लगता है टॉलरेंस लेवल, जो हमारी ज़िंदगी में हम जो बोलते हैं कि ये टॉलरेंस लेवल के बाहर है। तो अगर वो लेवल जब पानी के लिए आ जाता है तब वो भी सारी चीज़ें बाहर फेंकता है। सुनामी आती है, जब पानी का स्तर ऊपर आ जाता है तो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। जो भी प्लास्टिक है, जो भी गंदा कचरा है, या फिर जो भी अनवांटेड थिंग्स दैट नॉट सपोज टू बी देयर इन दिस प्लेस, everything comes out. Actually, everything water throws out. So just like that, we all should have, हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत सारी इम्पैक्ट दे के जाते हैं। तो हमें भी जस्ट लाइक वाटर, वी शुड टेक आउट ऑल आवर नेगेटिविटी, all our bad experiences, or whatever incidents that has given you a bad or negative impact in your life. Just try to pull all these things out, throw all these things out from your mind, and you can do that by writing. Give a words to your emotions, give a words to your experiences that you don't want in your life, that you don't want in your mind anymore. You can just write it out. अपने माइंड को एम्प्टी कर दो, है ना। जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको निकाल के, पॉजिटिव चीजें नहीं निकालनी, राइट। सेकेंड वे इज यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, विच आई पर्सनली डू. I always talk to my friends and I share all of my feelings, all my negative experiences, or whatever sadness, whatever depressive feelings if I have, I share everything with my friends. So this is my way. And yes, I also do a self-talk, which is my most effective way to share everything and take out all the negative things from my life. So you can choose your way, whichever suits you, whichever feels you better, right? But do that once in a while so that you have more room in your mind for positivity, for a good experiences. So whenever you feel grateful, you think about good things. You feel, if you want to feel good, you always think about good experiences from your past, not the negative ones, right? Have a great one, guys.